ओके ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छे क्लियर प्रणाम 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 धन तो विवेक ये था नथांतु विवेक भाई हमर क्लास रे सब बेले प्रेजेंट ना कि चलो So hello everyone, I am Sudipta welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. Tell me, how are you all? आज गोटे स्टूडेंट गाइस मो सहित देखा हिथिला कटक रे तो से स्टूडेंट क्लास रे प्रेजेंट अच्छो कि एक्चुअली सॉरी मो तम ना पछेरियो को एक्चुअली भूली गली प्रणाम मो तो सब बेले फाइन ही we are alive and cake ओके 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 चलो जल्दी जल्दी टिके क्लास को शेयर करो गाइस एंड जो माने क्लास को आसुचो लाइक टे मारी पुनी क्लास को पसो गोटे लाइक मारी क्लास को पसो सो दैट मु जानि परिबि केते की पिला अप होचो डाउन होचो हैला क्लास को लाइक टे मारी की आगु को आस गुरुमा ओलिकी हां हां ओलिकी जीवा स्टार्ट करिवा रुह रे सर तो तुमको लेट रे छाडिले ना हमें तो स्टार्ट करिवा एंड आज आपण मानकर इकोलॉजी एंड ईवीएस ऑफ ओडिशा ओडिशा सेंट्रिक गाइस आपण मानकर 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज अछि हैला मो सब बेले मारी के जाए नुह मारी के पस हैला गायत्री थैंक यू फॉर आस्किंग लो मो बहुत ही बढ़िया अछि हैला सो गाइस अगेन कहूची जो माने किछि भी बैच परचेज करबा को चाहू 3499 होची महापैक रा प्राइस जोडार वैलिडिटी आपनकर 1.5 ईयर रहूची ए 1.5 ईयर भितरे 1.5 ईयर भितरे आपण मानकर जते भी एग्जामिनेशन आसीबो स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे या अंडर रे आपनकर कंडक्ट हेसिबो हैला ना गायत्री तम ऊपर काई रखनी सो जदि आपण किछि स्पेसिफिक बैच नेबा को चाहू संदी देन दिस इज द PEO ARI Amin रो like PEO ARI Amin काटी दियो गाइस PEO सेंट्रिक आपनकर 9999 एंड आपन उत्कर्ष 1.0 1199 आपनकर किछि भी क्वेरीज अछि गाइस आपन माने कांटेक्ट नंबर को कॉल करी कि इन्फॉर्म नै पारिबे हन तो सुरेश लाइक करिवनी हो तम इच्छा हो सो टीचिंग रा गाइस किछि भी आपण माने बैच परचेज करिया को चाहू संदी देन द वैलिडिटी इज 1 ईयर एंड द प्राइस इज 1499 या पर भी किछि क्वेरीज अछि देन गाइस आपण माने कॉल करी कि क्वेरी सॉल्व करी देबे राकेश इस तमा प्लीज मते हैप्पी बर्थडे कोनी डेली बर्थडे विश करू छ चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस भितरकनिका नेशनल पार्क द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू that is the Vitarkanika National Park. Hello? Hello? ओके चलो मो केडीपी हो मते फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो देन वी विल गो टू द नेक्स्ट मैम ऑल 60 रे पॉलिटी जियोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक साइंस रा क्वेश्चंस आसुची कि ना एंड ऑल 20 की ए सब शिफ्ट रे सब क्वेश्चन आसुची एंड साइंस एंड टेक रो वेटेज भी काफी रहूची सो हमें साइंस एंड टेक रिलेटेड भी गाइस क्लास करिवा काली रो क्लास आपनकर फुल्ली साइंस एंड टेक सेंट्रिक थिबो जो टाइप रो क्वेश्चंस आपनकर आसुची एक्जेक्टली सेम टाइप रो हमें कोन ना प्रैक्टिस करिवा बिफोर दैट गाइस मते को भितरकनिका नेशनल पार्क दैट इज अ फेमस फॉर इट्स कोन मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड आपन मन जानि सथि दैट इज सेकंड हाईएस्ट मैंग्रोव हमर कोठी अछि ना मैम दैट इज इन द भितरकनिका एंड फर्स्ट कहिले सुंदरबना कोठी आसीबो ना वेस्ट बंगाल क्लियर मैम आपन काम भलरे हाँ परिटा थैंक यू फॉर आस्किंग सब भलरे हे गला इट वाज ए प्रोडक्टिव डे ओके सो इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ए मैंग्रोव आपन कोठी
कोठी अछि ना मैम वन एंड ओनली केंद्रापड़ा कोन कहबो ना मैम केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर प्रेजेंट अछि सो the year of establishment guys भितरकनिका national park was established in 1998 already तो मानु कहिछि 1998 मसिया रे कोन से एस्टैब्लिश हेई जाइतिला एंड आपनकर 19 मसिया रे महाबात्या आसीतिला हन नै मते को मैम स्टैटिक जीके आसुछि और करंट अफेयर्स बेसी आसुछि कहउचंती हो ना स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स आपनकर बेसी आसुछि ए तो अरे कौन हेछि वर्षा जगु मु रैपिडो ओला सबुथरे बुक करी रखुतिली वर्षा पई केही आसु नथिले एंड ऑल ऑफ सडन मु भूली जाई से सब बंद करिया पई गोटे पर गोटे कॉल आसुछि मैम बुक करथिले कि बाबा कि दयनीय अवस्था सो चलो सो हां आपनकर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड सब आसुछि आई नो दैट से अकॉर्डिंग त हम क्लास करूछि ना काली आपनकर इकोनॉमिक्स लाइक आपनकर कोन फाउंडर्स एंड फाउंडेशन ऊपर क्लास थिला प्रीवियस आपनकर इकोनॉमिक बजट ऑफ ओडिशा तापर क्लास थिला तो होछि ना क्लास आपनकर क्वेश्चन ना पैटर्न एग्जाम रो वेटेज को नै कि त मु क्लास आउछि काय ओरिड होछ इकोनॉमिक सर्वे टा मैंडेटरी आसुछि तो ट्राई करबी मोर आपनकर मंडे दिन इकोनॉमिक सर्वे रो होल क्लास रहिबो होल क्लास वाज ओके मंडे रे आपनकर हबो नेक्स्ट मते को इट्स इंपोर्टेंट गाइस एस्टैब्लिश केबे हेतला 1998 रे एंड इट इज रिमेंबर्ड दैट इट वाज द फर्स्ट डेजिग्नेटेड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केबे हेतला ना मैम 1975 रे फर्स्ट आपनकर कोन हेतला ना एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गाइस जेटा हमर कोन एस्टैब्लिश हे जाइतला 1975 तापर हेतला 1998 तार आपनकर एज अ रामसर साइट कोन 2002 रे आपनकर हेतला ए तीनटा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको आपन माने मने रखिथिबे एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम जोटा कि फर्स्ट कोडा रहउची मैम सुंदरबन रहउची एंड ए सुंदरबन कोठी रहउची ना मैम वेस्ट बंगाल ले रहउची एंड fauna and flora आपण मान जानि सन द पार्क इज फेमस फॉर द लार्ज population of the saltwater crocodile and it is also largest nesting ground of the olive riddle sea turtle ए olive riddle ता कोठी अछि ना मैम गहिर मथा बीच रे अछि olive riddle turtle ऊपर भी क्वेश्चन आसीबा ताकू रिलेट करबो गहिर मथा सहित हैला मंडे कहली ना मंडे आपनकर क्लास हे जिवो गायत्री मंडे आपनकर टोटल इकोनॉमिक सर्वे ऊपर क्लास कर तो चलो रिवर्स जदि आपन पचाले एसोसिएटेड विथ मन रखो ब्राह्मणी एंड बैतरणी फास्ट गोटे एक्सप्लेनेशन ने आपनकर पाखा पाखी 7-8 टा क्वेश्चन सॉल्व हे जिवो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मते को व्हिच इज द ओनली मराइन सेंचुरी ऑफ ओडिशा प्राइमरीली नोन फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑलिव रिडल सी टर्टल गाइस ऑलिव रिडल सी टर्टल कहा सदा में रिलेट करू छे यस पॉइंट दैट इज द गहिर मथा कोन हबो ना मैम गहिर मथा मराइन सेंचुरी एबे ही आपण मानु को कहली जदी नळपण बर्ड सेंचुरी पछराला नळपण बर्ड सेंचुरी आपनकर कोठी अछि ना मैम इट इज प्रेजेंट इन द चिलिका होना नै देन आपनकर चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपनकर कोठी आसीबो ना मैम कटक नयगढ़ एंड आपनकर कोन खोर्धा ए तीनटा को कटक एंड खोर्धा मोस्ट इंपोर्टेंट नयगढ़ तो नहीं कटक एंड खोर्धा को आपण माने रिलेट करि पारिबे देन आसिला सातकोसिया गंड आपण माने जानि सथि सातकोसिया कोठी मैम इट इज इन द क्लियर चलो नेक्स्ट मते कहबो द ओनली मराइन सेंचुरी ऑफ ओडिशा प्राइमरीली नोन फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑलिव रिडल सी टर्टल इज गहिरमथा मराइन सेंचुरी द सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश्ड केबे हेतिला ना 1997 ने मैम फर्स्ट गहिरमथा आपनकर कोन ना एस्टैब्लिश हेतिला तापर आपनकर 1998 रे कोन हेतिला ना एज अ नेशनल पार्क एटा एस्टैब्लिश्ड हेतिला फर्स्ट कोन हेतिला 1975 रे गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेतिला एंड लेटर ऑन 2002 रे कोन हेतिला सब कहा विषय रे ना भीतर कनिका विषय रे 2002 रे आपनकर रामसर साइट हेतिला चारटा ईयर अगेन इंपोर्टेंट मन रहि परिबो मते को हां नेक्स्ट बा वेरी गुड नेक्स्ट मते को सिमिलपाल नेशनल पार्क आल्सो ए बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट गाइस सिमिलपाल नेशनल पार्क जहा को हमें बायोस्फीयर रिजर्व बोली भी जानि छी हना नै सिमिलपाल नेशनल पार्क आल्सो नोन एज आल्सो हां गंजाम पाखरे भी अछि ऋषिकुल्या रिवर पाखरे हैला नेक्स्ट मते को सिमिलपाल नेशनल पार्क आल्सो ए बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड ऑब्वियसली मयूरभंज एंड सिमिलपाल सहित अपन रिलेट करिवे काहा को ना वन एंड ओनली मयूरभंज मन रखो सिमिल ए नेक्स्ट आस्टर जान दबो सो गहिरमथा एटी आसिला कोन कि रे गहिरमथा कोन पळे आसिला एठी अच्छा एटा गहिरमथा प्रीवियस एक्सप्लेनेशन दा लागि जाई छी अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस आसो सो सिमिलपाल नेशनल पार्क गाइस आपनकर एस्टैब्लिश केबे हेछि मते को एज अ नेशनल पार्क आपनकर केबे एस्टैब्लिश हैला एंड आपनकर गोटे कोन ने मैम बायोस्फीयर रिजर्व आपनकर केबे एस्टैब्लिश हेछि जल्दी जल्दी मते डेट को सिमिलपाल
as a national park आपनकर केबे established हैला as a biosphere reserve आपनकर केबे एटा establish हेछि tell me 2025 रे आपण मानकर कोन हेछि ना मैम as a national park just एबे recently आपनकर ऐड हेछि 2025 रे मने रखो आपनकर recent ऐड हेछि कि ना मैम आपनकर सिमिलपाल as a biosphere reserve and including that आपनकर total number of biosphere reserve ओडिसा रे केतेटा मते को including this total number of biosphere reserve ओडिसा रे केतेटा जल्दी कहबी केतेटा 15 16 19 20 ऑप्शन आपण मानक पई 15 16 19 20 21 जहा मारुछ मार कोन हबो राइट आंसर अरे नेशनल पार्क पचाले सिना कहबो नेशनल पार्क पचाले सिना कहबो तमारे कोन बायोस्फीयर रिजर्व कुई काटी दउछो बायोस्फीयर रिजर्व बेटी पचारिछि बायोस्फीयर रिजर्व गाइस केतेटा हबो सबु वेराइटीज ऑप्शन आपण मानकर बायोस्फीयर रिजर्व दीटा 6टा 18टा कोन आसुची वेरी गुड राइट कोन हबो ना मैम टोटल नंबर ऑफ 16 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर प्रेजेंट इन ओडिशा नंबर ऑफ केते आसीबो ना मैम 16 आसीबो हैला मन रखिताओ क्लियर नेक्स्ट चलो तो एको एठु एलिमिनेट करि देबा दिस एक्सप्लेनेशन नॉट ऑफ दिस क्वेश्चन जा कोठी अच्छे चलो सो द लास्ट ब्रैकिश वाटर लागून इन एशिया एंड द रामसर साइट जे कि आपनकर फर्स्ट टाइम पई रामसर साइट हेतिला मैम तार लिस्ट पीडीएफ रे अछि कि एबे पीडीएफ रे नाही बट म आपन मानकु कोन ऐड ऑन करि के दे देबी डोंट वरी सो द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लागून इन एशिया एंड रामसर साइट गाइस केबे हेतिला रामसर साइट ये केबे हेतिला ना मैम 1981 रे ये रामसर साइट रे कोन ऐड हेतिला एंड द फर्स्ट रामसर साइट कोन चिलिका लेक एंड द केवलाडियो नेशनल पार्क ऑफ द राजस्थान सो हमें कहि पारि सॉरी केवलाडियो ताको हमें ऐड करि कि मन रखि परिबा कि दीटा जाका एकाथरे हेतिला ना एकाथरे ता सहित रिलेट करि परिबो वेरी गुड सो राइट आंसर कोन हो ना मैम चिलिका अंशुपा जदि आपन कहिला दिस इज द फ्रेश वाटर लेक गाइस आपनकर ओडिसा रो फ्रेश वाटर लेक दे टाम्परा एंड अंशुपा एंड टाम्परा दीटा जाका आपनकर 2021 रे गाइस रामसर साइट रे जाई छंती बट कांजिया लेक आपनकर कोठी ना मैम नंदनकानन भितरे प्रेजेंट ये रहउची नंदनकानन भितरे प्रेजेंट एते के क्लियर अंशुपा आपन मान जानि संती टाम्परा आपन मान जानि ओके गोटे कटक गोटे गंजाम क्लियर कांजियाटा चंदका नहीं नंदनकानन सहित रिलेट करिवो हां चंदका सहित रिलेट करि परिवो सो चिलिका लेक इज द करेक्ट आंसर and it is the largest brackish water lagoon in Asia and the second largest coastal lagoon in the world located on the east coast of India and Odisha clear and it was also the first Indian wetland of the international importance designated under the Ramsar Convention in 1981 एतिकी clear next इबा मते को which of the following is an endemic species of Chilika Lake endemic species कहिला माने कोन ना तो रेयर स्पीसीज जोटा कि आपनकर स्पेशली हमें कहि परिबा चिलिका रे ही देखा जांती कोन नै मते को 1973 यस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रे आपनकर 1973 यस करिडा वेरी गुड 1973 रे आपनकर चिलिका लेक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रे ऐड हे जाइथिला सॉरी प्रोटोकॉल नै मॉन्ट्रियल रेकॉर्ड रे तार ना ऐड हे जाइथिला बट 2002 रे से सेतरो कोन ना बाहरी जाइथिला बाहर करि दिया जाइथिला एंड एबे तार ऑथराइजेशन के नॉट मॉन्ट्रियल से एबे तार ऑथराइजेशन निजे चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी इज दैट क्लियर very good next देखो which of the following is an endemic species of Chilika rare कोटा में कहउछ ना one and only that is the Irrawaddy dolphin होना नै मते को सी so the Irrawaddy dolphin is considered a flagship species of the Chilika lake while it is also found in the other coastal areas and the rivers of the southeast and south Asia that is not the endangered this is एटा अपन कोन कहिछि ना स्नैप करछि endemic endangered and endemic जदि आपन क्वेश्चन पसर गले कोन कहबो ना मैम endemic माने आपन कोन कहउछे ना रेफर टू द स्पीसीज जोटा कि गोटे लिमिटेड एरिया रे मिले ओवरऑल हम जो देखिबा एठी चाहिले देखिबा सेठी चाहिले देखिबा सबुठी आपन को कोन इजीली मिलिबे नाही गोटे स्पेसिफिक एरिया रे मिलिबे ताको हम कोन कहउछे दैट इज द endemic one हैला रीजन बुझी पारिला वेरी गुड जदि आपन को endangered कहि देला माने बहुत जल्दी से संख्या कमी कमी विलुप्त प्राय हेबा को जाउछंती दैट इज द endangered
हैला चलो नेक्स्ट मते कहबो the mangrove forest of Vitarkanika are formed by the delta of which river jaldi the mangrove forest of the Vitarkanika are formed by the delta of which river first question elaborate करथिली को river नै कि आपण माने आंसर देबे को river नै कि आंसर देबे very good मैम गोटे डेट रिलेटेड वीडियो आनंतु पक्का कालीर क्लास आपनकर डेट रिलेटेड वीडियो रहिबा राकेश कुमार दिस इज स्पेशली फॉर यू नेक्स्ट मते को द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ भितरकनिका गाइस कोन आसीबो महानदी एंड ऋषिकुल्या नॉट एट ऑल ऋषिकुल्या आसीला कोठी आपण मानकर ना मैम ई आपनकर गंजाम को पळे आसीबो आपण को जते बेले मैंग्रोव भितरकनिका कथा कहिछि दैट मींस आपण केंद्रापड़ा पाखु आसीबो दैट इज ब्राह्मणी एंड बैतरणी ऑप्शन सी ब्राह्मणी बैतरणी क्लियर ब्राह्मणी आपनकर ओरिजिन कोठु ना मैम सुंदरगढ़ काहे कि सुंदरगढ़ कहूची इंस्टेड ऑफ झारखंड बिकॉज़ आपनकर सुंदरगढ़ टी शंख एंड कोयल मिसी कि आपनकर सुंदरगढ़ टू ब्राह्मणी नाटा से पाइछ तो हमें ता सहित जीवा हना नै मते को देन आपन को कोन पछारिबो ना मैम बैतरणी आपन कोठु कहिबे ना मैम दैट इज द गोनासिका एंड आपन मानको जदी एठी कोन कहला ना याकू गुप्त गंगा बोली भी कुहासे गोनासिका पर्वत और गुप्त गंगा एंड कोठु बाहरिसी ना मैम केउझरु गाइस ओरिजिन हेची सो द मैंग्रोव एंड फ्लो हेची कोठी कि ना केंद्रापड़ा सो द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ भितरकनिका आर फॉर्म्ड बाय द डेल्टा ऑफ द ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर ओके नेक्स्ट चलो मते को फिश एठी आपनकर गोटे आसुची गाइस इस्चुराइन इकोसिस्टम ए इस्चुराइन इकोसिस्टम माने मते कोन कहिलो इस्चुआरी माने कोन आपण माने बुझुचंती जेते बेले दीटा नदी तीनटा नदी चारिटा नदी या फिर छाड़ छटा नदी जेते भी नदी हो मिसिला परे से माने एकाठे मिसी के पुनी समुद्र पाखु तो जाइथिबे ना समुद्र आडू तार माउथ ओपन हेथिबो सो जो वाइडर एंगल ले माउथ ओपन हेथिबो सपोज दिस इज योर समुद्र हना ने मते को समुद्र ये तार जाईची गोटे साइड रे आसी कि आपण तो एमितिया गोटे गात भले हेकी धीरेकी पसि नथिबो से पूरा माउथ रा एई भले ओपन करिथिबो और ताठु भी बड़ ओपन हेथिबो से जो वाइडर स्पेस रहिची माउथ ओपनिंग पॉइंट रहिची द स्पेस आको हम कोन कहछि ना दैट इज द इस्चुआरी एतिकी बुझिलो नेक्स्ट देखिबा को Which district of Odisha is known for a high density of the black box? Guys, black box पाई हमें कोठी कहूचे black box आपनकर high density रे कोठी मिलंती मते कुआ black box आपनकर high density रे कोठी मिलंती बहुत संख्या रे आपण माने दीटा लैंड सहित आपण माने रिलेट करि परिबे हन नै मते कुआ दीटा लैंड हेले कोन कहबो ना गंजाम एंड कोणार्क हन नै बट इट इज डेंसिटी कथा पचारि देला डेंसिटी कथा पचारि देला मते कुह कोन राइट आंसर चूज करिवो इंस्टेड ऑफ दैट द रेयरेस्ट वन जोटा कि आपनकर गंजाम रे देखिया को मिले एंड आपनकर कोठी कोणार्क रे देखिया को मिले जदी एठी ऑप्शन ने ओनली गंजाम अछि सो आपन माने इजीली आंसर चूज करि पासुनी इंस्टेड ऑफ दैट जदी गाइस आपनकर कोन थिबो ना मैम कोणार्क थिबो एटा राइट हबो बट इते डेंसिटी कथा पचारि दैछि ना ताहाले आपन माने कंफ्यूज हेबेनी गंजाम प्लेन रे आपनकर हाई नंबर्स रे देखिबा को मिलन हैला किछि भी okay so Ganjam district of Odisha is known for the high density of the black box so the local community in areas like the Vetnoi and the Baliapada plays a crucial role in the protecting these animals due to the religious culture beliefs clear chalo next mate ko which site in Bargarh and Balangir questions टिके देखो बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन आसुची जमा पैनिक होनी बहुत रु बहुत इजी लेवल क्वेश्चन आसुची जस्ट बिकॉज़ आपण माने सेति के लेवल ला प्रिपरेशन करि नांती आपण को लागुची डिफिकल्ट और कहाटो सुनी के आछन पिला माने आपण को एग्जाम हॉल रे आसी कि डरेवा को भी कहउथिबे कि अरे यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आछि जस्ट बिकॉज़ आपण माने कर कोन ना मोरल डाउन हे जिवो एंड तांको माने कर हाई चांसेस बढ़ी जिवो सिलेक्शन हेबार तो टोटली कहा को मु तो कहबी टोटल से एनालिसिस किछि देखनी निजे जानिला निजे बेस्ट कलो दैट्स इट एंड डेली एनालिसिस न लिखि राती रे गोटे थरा गोटे एनालिसिस देखि दियो काम शेष ए एनालिसिस देखि त माने टेंशन रहउछ मु कहूची मो कथा मान नेक्स्ट को which site in Bargarh and Balangir district was declared a biodiversity site भाबरे आपनकर कोउटा डिक्लेयर हिज मते को मंडासारु गंड और महेंद्रगिरी हिल गंधमार्दन हिल और सातकोशिया गंड कोडा हबो सी वेरी गुड मित कुमार कोन हबो राइट आंसर वेरी गुड दैट इज अरे गंधमार्दन हिल रेंज कोन मारुछ राइट आंसर गंधमार्दन हिल रेंज कोन हबो गंधमार्दन हिल रेंज आपनकर हबो राइट वन आई थॉट द महेंद्रगिरी बट नो
महेंद्रगिरी तो गजपति ना ओके पढ़े ऐसा सो गंधमार्दन गाइस which spans of the Bargad and Balangir districts of Odisha was declared as a biodiversity heritage site and it is known as the Ayurvedic paradise and is the third such site in Odisha. Clear? So the Gandhamardan hill range is located between the Bargad and Balangir district. That means Dira district को कौन हमने से फैली की अच्छी. It was declared a biodiversity heritage site by the state government to protect its fragile ecosystem. The hill range is known for its unique flora, fauna, and everything. And important कौन अच्छी? आपनकर नृसिंहनाथ temple and हरिशंकर आपनकर एटी present अच्छी. Clear? Next चला. हाँ मौसमी तमें खाली कंफ्यूज हो जाओ ना कि तो मते को द मंडासारू गंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ए मंडासारू आपनकर कोठी अछि को प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक थिले आई एम सॉरी फॉर दैट ओके मते को मंडासारू आपनकर कोठी अछि नवरंगपुर पक्का देखिबा कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर गजपति को छाड़िले बाकी तीनटा ऑप्शन पूरा भयंकर अछि त माने कंफ्यूज हैला बळे ह ना So right answer कौन होगा? This is Kandhamal. So the Mandasaru Gond Biodiversity Heritage Site is located in the Kandhamal district of Odisha. So the Mandasaru Gond is known as the Silent Valley of Odisha due to its rich biodiversity and the frequent weather changes. And it is located in the eastern part of the Kandhamal district. So the area is home various species of the flora and fauna and declared as the Odisha first biodiversity heritage site. टोटल तीनटा भीतर आपनकर फास्ट डिक्लेयर हेछि दिस वन इज द मंडासारू क्लियर अच्छा ओसीएस एग्जाम देबे हो ऑल द बेस्ट कहि दबो तम सोनाल भाई को नेक्स्ट आसा व्हाट परसेंटेज ऑफ ओडिसास जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क गाइस प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क भीतर मते कहिलो हां राइट जेते बेले आपनकर कंधमाल थिबो ना फुलबाणी को आंसर आसीबनी कारण आपनकर सब बेले डिस्ट्रिक्ट विषय रे पछारी थिबो सो गो फॉर द कंधमाल नेक्स्ट धन खाली मेसेज करूच धन पुनी तमे डिलीट करूच धन मेसेज करूची धन डिलीट करूची धनर कोन हेची चलो So what percentage of Odisha's geographical area is under the protected area? 2.5, 5.19, 8.35 or 10.2? Right answer कौन हबो 8.35 total नहीं बोधे कौन हबो 5.19%. So the percentage of Odisha's geographical area that is under the protected area network is 5.19%. So the network includes 2 national parks and 19 wildlife sanctuaries. Some sources also state the percentage is approximately 5.35%. बोल जेतबेले 5.35 और 5 घरे थिले ताको आंसर मारि दो हैला नेक्स्ट बा संबलपुर एलिफेंट रिजर्व्स मेनली स्प्रेड्स अक्रॉस व्हिच फॉरेस्ट डिविजन बाघ भाई नहांती की क्लास रे धनर पांडु चाली जाईची अरे so sad of you ए टाइम रे जिबार थिला कहिलनी कि एग्जाम ता सरी जाउ जिबु तते टाइम मिलियो मते कांदिया को एबे पढारु टाइम नाही कि कांदी भी परिबी धन को so the Sambalpur elephant reserve mainly spreads across which forest division that is the Anugul Bamra and Katak guys Sambalpur कथा कहला माने तमानकर कटक ही सेपरेट हे जाउथबो बामरा बुनाई एंड झारसुगुडा आठगड़ भी सेपरेट हो जाउची सातकोसिया ये भी सेपरेट हो जाउची रहिला की आपनकर ऑप्शन मते कुओ हे सस्मिता सस्मितार पूर्ण रोग बालानी से पूर्ण धनठु सिकी कि सस्मिता मेसेज डिलीट होची हां एबे बुझिली धन सस्मिता को देखै कि ओटे मेसेज करूची जेमिति सस्मिता मेसेज देखि दोची धन डिलीट कर दोची सस्मिता सेम धन को देखै कि ओटे मेसेज करची जेमिति धन मेसेज पढी देला सस्मिता डिलीट कर दोची माने बढ़िया कम्युनिकेशन तमरा माने लाइव चैट रे सब हे प्रभु कली जुग चलो सो दिस इज द बामरा बोनाई एंड झारसुगुडा सो द संबलपुर एलिफेंट रिजर्व्स मेनली स्प्रेड्स अक्रॉस द फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ बामरा बोनाई एंड झारसुगुडा राइखोल एंड संबलपुर सो द करेक्ट आंसर कोन हबो बामरा बोनाई एंड झारसुगुडा हैला सब लाइक करो शेयर करो सेशन को छी की मिछा कथा मैम कहू जंती हां किछि त गड़बड़ अछि सो व्हिच वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज सिचुएटेड ऑन एन आइलैंड इनसाइड द चिलिका लेक
What will be the right answer? Tell me, jaldi. हाँ पा पिला भी पढ़ी दउसंती सब गला माने एठी पूरा घर डिंकी कुंभीर ना कि चलो which wildlife sanctuary is situated on an island inside the Chilika Lake? Chilika Lake पाखरे अपन पर कोन आसीबो? कुलडिया वाइल्डलाइफ सेंचुरी बिल्कुल नहीं मते को कुलडिया वाइल्डलाइफ सेंचुरी कोठी अछि नळपण वाइल्डलाइफ सेंचुरी ऑब्वियसली हबो सातकोसिया नहीं बॉयसीपाली नहीं ए कुलडिया एंड बॉयसीपाली कुलडिया कोठी अछि मते को कुलडिया वाइल्डलाइफ सेंचुरी आपनकर सिचुएट कोठी अछि को डिस्ट्रिक्ट सहित अपन रिलेट करछंती कुलडिहा कुलडिहा सहित काहा को रिलेट करूछ अरे नळबण तो मु जानि छी कुलडिहा हे पुनी दास रो चललानी होंडा पेटी देवी कुलडिया सहित वेरी गुड दैट इज इन द बालेश्वर सहित को रिलेट करूछ देन बॉयसीपाली कहिला बॉयसीपाली कोठी अछि बॉयसीपाली कुहा एबे कोठी अछि अरे कुलडिया बालेश्वर अछि कुलडिया अमित घर पाखरे बा अमित देखेनी बुलेनी नी अमित घर पाखरे अछि बॉयसीपाली कोठी वेरी गुड बॉयसीपाली आपनकर को एरिया रे ना मैम बॉयसीपाली इज लोकेटेड इन द नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोठी ना मैम नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे अछि नेक्स्ट देखो सो द नळबण बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन द नळबण आइलैंड which is a larger island within the Chilika Lake and it was designated as a bird sanctuary 1987 केबे 1987 रे आपनकर गोटे बर्ड सेंचुरी भाबरे से डिक्लेयर हेची 1981 रे रामसर साइट चिलिका क्लियर am I clear सबु चलानी सस्मिता पुणी कोन गोटे मेसेज सस्मिता मु मुंडा पिटी देवी देखो तुम मेसेज करके डिलीट करनी से जिनसाटा मते भारी इरिटेट लागे अरे मेसेज बिल्कुल करनी मेसेज करके डिलीट काई करूजो माने गोटे क्यूरियोसिटी थिबो कोन लिखि देला कि रे किछ गोटे भीतर माने पाख कथा लिखि देला कि माने माइंड ता सेट रहइबो ना नहीं भाबो So a main cause of environmental degradation in Odisha's coastal area. Guys, आपनकर ओडिसा रे coastal area degrade हे जाई धीरे धीरे degrade हे जाउची एंड आपण माने कहउथे मैम degrade कोन होची 480 किलोमीटर थिला अबे 574 हे जाईची coastal length हमर केते 480 किलोमीटर थिला एंड सीए तो चेंज हे कि 574 किलोमीटर हे जाईची ये तो बढ़ी जाईची degrade केमिति हैला तो आपण मानकर मते कहिले एटा सत्तर कोन बढ़ी जाईची मते टिके भाबी कि गुह ए 574 किलोमीटर ता बढ़ी छि ना कमी छि माने सत्तरे कोन कोस्टल लेंथ ता आपनकर बढ़ी जाई छि कांसेप्ट आपन मानकर एति कि क्लियर अछि कि हाउ इट इज पॉसिबल मैम एग्जैक्टली मिहिर मु सेटा ही आपन मानु कहू छि आपन माने सेति कि क्लियर कि मैम ऑल सब्जेक्ट स्कोरिंग टॉपिक जाक टिके कुहंतु मोर एग्जाम 20 दिन परे अछि प्लीज रिक्वेस्ट ओके सौरभ 50 बढ़ी छि 96 किलोमीटर अच्छा परिडा बाबू मते कहंतु एटा कोन सप्ते रे बढ़ी छि कि नो गाइस एक्चुअली आपनकर कोन कोस्टल लेंथ एमिति सडन बढ़ी जायनी जस्ट बिकॉज ऑफ द अमेजिंग सैटेलाइट हम माने लॉन्च करू छि ता पाखरे जो आपनकर कोन लागे मैम एसएआर लागे व्हाट इज एसएआर दैट इज द सिंथेटिक एपरेचर रडार सेतिर आपनकर गोटे कैमरा हाई इंट्रो कैमरा आपनकर कैप्चर करिकि निया जाय जते भलो दिन को दिन कोन एडवांस होची टेक्नोलॉजी सो आपनकर बेटर क्वालिटी रो कैमरा सेतिर लागु जोतरे कि पूरा पर्टिकुलरली जूम हे कि आपन माने को टोटल लेंथ ता देखै पारु नॉट ओनली द ओडिशा कोस्टल लेंथ इवन द इंडिया रो भी 7000 समथिंग टू चेंज हे कि 11000 हे जाय छी तो सेटा भी चेंज हे छी जस्ट बिकॉज़ हमें पूरा डीपली हमें पूरा कोन बढ़िया कि मापी कि जानि पाछ एंड ऑन एंड एवरेज हमर आगुर जो मैपटा थिला सेटा ऑन एंड एवरेज थिला एबे सेटा डेप्थ रे हम रिकॉर्ड करि पारुची चेंज बिल्कुल हेनी आउ टिके आगु को आउ भलो कैमरा आसीबो देन आहुरी तार गळी कंधी मापी कि आउ टिके बढ़ी छिबो सो एटा होची एक्चुअल जिंस हैला चलो तो यार आंसर टिके कहि दियो ए मेन कॉज ऑफ द एनवायरमेंटल माने कोस्टल एरिया डिग्रेडेशन दैट इज द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन साइक्लोन्स एंड कोस्टल इरोजन डेजर्टिफिकेशन ओवर डेजर्टिफिकेशन तो हमर कोन ओडिसा सहित रिलेशन नाही सो राइट आंसर कोन हबो ओडिसा इज अ साइक्लोन एंड द फ्लड फ्रंट माने स्टेट हन नहीं मैम पुराना डाटा सेति की थिला देन अगर आइलैंड ऐड हेथिला बट एबे हेसी आ किसी वाटर बॉडी छोटो बड़ा ऐड हेसी आ हां सेगुडा हमर को लेंथ रे ऐड हे जाई छी हैला हां नेक्स्ट मते को ओडिसा's coastal line is highly vulnerable to the cyclones and the associated coastal erosion which are significant drivers to the environment degradation एतिके क्लियर नेक्स्ट फॉर यू टेल मी a key environmental challenge tell me a key environmental
environmental challenge in Odisha mining region guys Odisha रा mining region पाई गोटे like कोन advance और हमें कहि परिबा गोटे challenge situation आसी जाय छी हन नहीं क्वेश्चन बहुत इजी आसुची अरे वाह बढ़िया कथा तो मते को एक की environmental challenge Odisha mining region कोन आसीबो flooding आसीबो air pollution and the land degradation आसीबो deforestation आसीबो all soil salinity आसीबो what will be the right answer air pollution तो मानकर समस्तिकर आंसर आसुची ना कि so the air pollution and the land degradation mining activities particularly open pit mining release the significant amounts of the particulate matter and other pollutants into the atmosphere so that open mining आपनकर थाए suppose आपण माने देखि जंदी जो पाखा पाखा आपण मानकर जदी सीमेंट फैक्ट्री थिबो या फिर क्रशर भी आपण मानकर थिबो से एरिया टा केत्ती की डस्ट थाए बिकॉज़ ऑफ द ओपन वन सो से आपनकर ओपन थाए आ जते बेले पवन आसे से सबुति का आपनकर खेले की नै जाय पवन रे बुहाई की नै की आपनकर चाष जमी ऊपर पूरा गोटे आवरण परिके पकई दिए सो दैट इज व्हाट सेटा हमर कोन माटी रो उर्वरता को लॉस करूनी की करूछि ना नै सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन द एयर पोल्यूशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन ये टोटल आपनकर कोन ना माइनिंग ऊपर गाइस इफेक्ट पकोची एंड विथ दैट आपनकर एग्रीकल्चर ऊपर भी कोच बुझिस वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को द बिगेस्ट थ्रेट टू ओडिशास मैंग्रोव इकोसिस्टम गाइस ओडिसा रा मैंग्रोव इकोसिस्टम पई गोटे बिगेस्ट थ्रेट मते को कोटा ओडिसा रा कोस्टल इरोजन पई बिगेस्ट थ्रेट ओडिसा रा माइनिंग पई बिगेस्ट थ्रेट एबे को मते ओडिसा रा मैंग्रोव इकोसिस्टम हिंताला बन कोठी भीतर कनिका बुझिस धन को 24 पई 24 आवर्स पई ब्लॉक कर देबी खाली मेसेज से करूची ताकू जे पढ़िया कथा तांकर पढुचंती तापर से डिलीट मार दोछ हैला मैम बीजेडी भलो ना बीजेपी समस्त भलो जी हम पई काम कला से भलो नेक्स्ट को द बिगेस्ट थ्रेट टू ओडिशास मैंग्रोव इकोसिस्टम टूरिज्म की डिफोरेस्टेशन एंड फॉइल कंस्ट्रक्शन साइक्लोन्स और द इन्वासिव स्पीसीज आपण मानकर कोन ए दीटा इजीली एलिमिनेट कर दोचंती दीटा ऑप्शन रहला ता भीतर कोन ऑप्शन सी आपण मानकर आसुची सो राइट आंसर कोन हबो ना डिफोरेस्टेशन एंड फॉइल कंस्ट्रक्शन अरे हां राइट डिफोरेस्टेशन एंड फॉइल कंस्ट्रक्शन यस ताकू मु केमिति एलिमिनेट कर दोची ताकू काहे एलिमिनेट करबी दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट दैट इज द मेन रीजन केमिति that the several factors of the threat in Odisha's mangrove forest but deforestation for the various human activities is consistently cited as a major drive to the loss and degradation so हमें कहि परिबा कि different type रा culture agriculture fuel आसीबो केमिति मते कुओ ना मैम हमरो कारखाना कहि परिबा कारखाना हला या फिर इंडस्ट्रियल एरिया हला या फिर आपण माने बिगेस्ट ये नियंतु आपनकर कोन ना मैम पारादीप पोर्ट हला तो ता पाखरे जते आपनकर बोट जाउची सेठी तो आपण मान जानसुंते ऑयल रा आपण कोन एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग भी सेठी होउची ऑयल रिफाइनरी आपनकर सपोज एग्जांपल नियंची कोडी बेस्ट ऑयल रिफाइनरी आपण माने गोपालपुर को नउचंती बट स्टिल पारादीप पोर्ट रे भी हमर आयरन ओर सहित ऑयल रिफाइनरी होउची सेइथरु कोन मिनरल्स पानी रे बोई की जाउची जोडा की केते बाट डिस्टेंस ही केते सो सेइटा त आपनकर फ्यूल भी आसीबो ना फ्यूल आपनकर भासी की आसी के से हेंडाळ बना ऊपर तार रूट उडा करे लागिबो एंड ता सहित से नष्ट भी होबो एंड जदी डिफोरेस्टेशन धीरे धीरे हैला जंगल कटा गला जंगल रो यूज करा गला मनिसर निजर हैबिटेट पई देन से इनडायरेक्टली हमर कोन मैंग्रोव ऊपर इफेक्ट पकेइबो नाही कि टोटल सोसाइटी टोटल लैंड ऊपर टोटल एनवायरनमेंट ऊपर टोटल इकोलॉजी ऊपर हमर डिफोरेस्टेशन रो कोन मैम इफेक्ट क्लियर मैम ओनली पेड बैच पिला को रिप्लाई दोसनी मैम एते पार्शियलिटी करंती नि जानचो ना सेटा मो जातक रे नै मो समस्त को रिप्लाई दिए हैला देखो कमलेश सेमिति आसी कि संगे संगे हार्ट फाटोडा दे पकोची तो आखिरा जते बेले कमेंट सेक्शन को जिवो कोडा हार्ट ऊपर आखिरा जिवो तो मो पढिबी तापर पिला कहबे कि मैडम खाली पो मान को कमेंट पढुसंती कारण पो माने मैडम को बेसी टिके टेकुसंती बेसी टिके प्रशंसा करूसंती एटा एक्चुअली रे नुह हमु से टाइप रो भी गाइस नुह मु जहा कुए पूरा खोली की कुए अंड समस्त को मुहरे कुए पछरे गोटे भितरे गोटे ए सब मोदरा हुए तमान जदी मते ठीक से जानिबा को ट्राई करिवो मत लागिवो छोटो पिला मैं जानि परिबनी हैला धीरे धीरे बुझी परिबो कि मैम को टाइप रो हैला एंड ऑनेस्टली कहिबी तमान को भितरे लाइक मो टाइप रो मु कहिबिनी बाकी सेंती नाहंती कि मु कंसीडर करबी यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स हैला तो मु कहा पई पार्शियल केबे हेइनी हेबिनी नॉट इन माय लाइफ स्पैन ओके चल so the coastal Odisha is highly vulnerable to the cyclones due to coastal areas guys asila coastal Odisha apan kara asila this is highly vulnerable to cyclones due to
हिल बैरियर्स थिले आपनकर साइक्लोन आसी ही परंतानी सो हिल बैरियर्स तो नुह फ्लैट प्लेन्स एंड द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी यस गाइस जेहेतु आपनकर फ्लैट प्लेन्स हमर अछि तो आपनकर साइक्लोन आसले सीधा माडी जीवो हना नै मते कुआ हां बेसी टिके होउची टाइट करबा टाइम टा आसी करबा चलो पिला माने एन्जॉय करी क्लास करिया दरकार एत स्ट्रिक्ट क्लास करी पिला भी कोन पाइबे कुआ so the flat plains and the high population density so the coastal areas of Odisha are characterized by the low lying flat plains which allow the storm surges and the strong winds from the cyclones to the penetrate far inland that means आपण माने भाबंतु जदी flat plain हमर अछि जदी flat plain आपनकर अछि मते कोहंतु जते बेले आपनकर हिल बैरियर रहिबो कोन हिल बैरियर रहिबो एंड सपोज दिस इज द ओशन देन आपनकर बैरियर क्रॉस करि परिबो नै सपोज फ्लैट प्लेन अछि देन टिके आपनकर जुआरा बढ़ी गला देन आपनकर कोन फ्लैट प्लेन आडू आसी परिबो नै कि दिस इज द रीजन कांसेप्ट लगाओ हैला यमराज किलबिल अरे बा पूरा किलबिल कर दोजो नेक्स्ट मते को द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन ओडिशा सिटीज the major source of water pollution acha mate कहलो speed of wind more in the flat plain obviously speed of wind भी हुए that's why the cyclone आसे हमर cyclone रा आई टा कोठी डिपेंड करे the wind रा speed ऊपर हना नै जते बेले अवपातर रूप नि आपनकर wind रा speed सेति की थाए कोंती ना आपनकर wind रा speed एति की बेगरे आपनकर cyclone माडी आसुची देखिबा कि जते बेले land को टच करूची पवन रा बेग केते रहिबो that means that depend upon the flat plain also हैला नेक्स्ट मते को द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन ओडिशा सिटीज कोन आसीबो फर्टिलाइजर रन या सब कोन रिक्वायर अछि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड म्युनिसिपल वेस्ट ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन और द डिफोरेस्टेशन कोन कहू राइट आंसर तमनकर राइट आंसर कोन हबो मते कुआ धन तमे जम्मा बुझी पारुना हे मिहिर एमिति स्पैम नै मेंटेन द डेकोरम right kon haba now option B that is the industrial influence and the municipal waste so the municipal sewage and the domestic effluents are considered a primary source of water pollution in the urban areas of Odisha most of the sewage state apankara first apankara best drainage system jo apankara otto करिथिले हमर आर्किटेक्चर ऑफ भुवनेश्वर आपण मान जानसन द न्यू कैपिटल ऑफ द ओडिशा 1948 रे फॉर्म हेतिला सो ओटो वाज द कोन आर्किटेक्चर ऑफ द भुवनेश्वर सो सी आपनकर काहे की ए जो सी आपनकर चंडीगढ़ रे भी थिले सेम आर्किटेक्चर एंड से तांकर फेमस कोन जानते से मानो काहे की आर्किटेक्चर वाली चूज करथि ना से ड्रेनेज सिस्टम टाको बहुत सही तरीका रे गोटे स्टेट गोटे कैपिटल हैला फॉर्म कला बेले आपण मानकर करिथांती दैट्स व्हाई हमें तांको कोन ना गोटे भलो आर्किटेक्चर बोली आ मॉडर्न इंडिया रे आपनकर जते न्यू कैपिटल फॉर्म हेछि तार आर्किटेक्चर दायित्व आपनकर की नै थिले ना मैम ओटो नै थिले हैला तो तथापि तो भुवनेश्वर देखुछ की पानी आ चलो नेक्स्ट कुआ द प्राइमरी इकोलॉजिकल रोल ऑफ सातकोशिया गॉन्ड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज मते कुआ द प्राइमरी इकोलॉजिकल रोल ऑफ सातकोशिया गॉन्ड गाइस इकोलॉजिकल कोन रहिबो मते कुआ द प्राइमरी इकोलॉजिकल रोल ऑफ सातकोशिया गॉन्ड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मैम एबे आईएस लेवल रो आज चेंज हेचंदी अच्छा या माना बेबी सर कोन तमे पढिडा मेसेज कर मते WhatsApp रे कोन मेसेज पढो छु जानि भी पारुनी तो सातकोशिया कोन आसिले टाइगर ब्रीडिंग पाई गाइस टाइगर ब्रीडिंग माने को कथा माने पके दो थिके ना मैम व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग कोठी हेतिला ना मैम इट वाज इन नंदनकानन सो नंदनकानन ने एशिया रा फर्स्ट व्हाइट ब्रीडिंग टाइगर हेतिला एंड ता सहित माने रखो कोन ना द नंदनकानन जू रेटा हेतिला 19 केबे हेतिला एटा 1962 रे मन रख 1962 रे एटा हेतिला हैला धन तमे सब जानि दोछ ना कि हो सो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पे आपण माने कोन मन रखले ना मैम हां क्रोकोडाइल कंजर्वेशन मेडिसिनल प्लांट प्रिजर्वेशन मेडिसिनल प्लांट हबनी ता सहित आपण कोठी जिवे ना मैम गंधमार्दन पर्वत गंधमार्दन हेले कोन कहबो ना बलांगीर एंड बरगढ़ स्प्रेड हे कि अछि एलिफेंट कॉरिडोर हेले कोन बुझुछ ना मैम चंदका एलिमिनेशन गला पर रहिला कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सी द सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश्ड केबे हेतिला 1975 रे आपनकर कोन हेतिला ना ए सातकोशिया आपनकर जदी पछला घड़ियाल कुंभीर विषय रे अरे केंद्रापड़ा नु हां बुझ टिके एठी सातकोशिया विषय रे पछाची
एटे सातकोशिया पचारे भितरकनिका नाइ जदि भितरकनिका पचारिला ताहाले मने रख दैट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जदि सातकोशिया पचारला दैट इज द घड़ियाल कुंभीर दीटा जिंस मन रखिबा स्क्रीन नेले क्लियर होनी प्लीज स्क्रीनशॉट नेले सिन्मो यार कोन स्क्रीनशॉट तमे परे नै परिबो ना परे भी नै परिबो तुमको पीडीएफ दो जी स्क्रीनशॉट कोन दरकार व्हाई So crocodile conservation, the sanctuary was established to protect the endangered gharial and magar crocodile and gharial reservation conservation unit was opened in the area in 1975. The Mahanadi River Gondreta heithila. Okay, clear? Seiti tapas puni delete kala tapas. Next mate kuha Odisha's white tiger captive breeding center is located. Ebe kuha कहली जस्ट राइट आंसर अपन मानु कहली जल्दी आंसर करा अरे 46 हे गलानी 19 क्वेश्चन एचटी के चला स्पीड रे जिबा ठीक है स्पीड रे जिबा संगे स्पीड करके 30 टा लगेबा तापर धीरे धीरे जिबा 10 टा हैला कुआ Mahanadi River provides a suitable environment for these reptiles. Yes. So Odisha's white tiger reserve apanଙ୍କର white tiger breeding कोठी हेतला नाइसिया रो फास्ट that is the Nandankanan zoological park. Clear? No more explanation needed. Still, Nandankanan zoological park is known for its successful captive breeding programs, including that the white tigers. Clear? Next, Iba. The Eastern Ghat in Odisha are important for guys. Eastern Ghat Odisha re mate kuha. Total 40 ta question read me series. The Eastern Ghats in Odisha are important for whom? Koti pai? Tourism pai, agriculture pai, wildlife corridors and biodiversity pai or industry pai? कहला मते industry को मैं eliminate कर देली, agriculture को eliminate कर देली. दीटा option रही जी. दीटा option choose कौन कौन सा? Very good. That is the wildlife corridors and the biodiversity. So the Eastern Ghat region is recognized for the rich biodiversity with a variety of flora and fauna. Guys, Eastern Ghat अपन मैंने कहितली spread कोठु को जाय करिछि. Eastern Ghat हेला, Western Ghat हेला, हन नहीं. हमर कोन ग्रेट हिमालयन हेला, सब कहितली अरावली रेंज हेला. मने पडुछि परिडा क्लियर अछ? गायत्री तमरे क्लियर अछ? क्लास रे ऑलरेडी पढै छै विषय. So next देखिबा. Which national body monitors the pollution and enforces the environmental laws in Odisha? Which national body monitors pollution and enforces the environmental laws in Odisha? कौन हपर राइट आंसर मते कुआ भाई मते एग्जाम रे केमिति होउची सब ठीक ठाक चली छी त कौन हो तबरे से चेयरमैन हो चलो राइट आंसर कौन अब मते कुआ yes that is the which national body monitors the pollution that is the Odisha State Pollution Control Board. Let's check that is right answer. Odisha State Pollution Control Board will be the right one. And the Odisha State Pollution Control Board is the regulatory authority of this, and the Central Pollution Control Board CPCB. This one is the OSSTET. This is the CPCB is the primary national agency. जो central level में देखिबा that is the CPCB. And the National Green Tribunal कौन अछि ना is a specialized judicial body that handles the cases related to the environmental protection and the conservation. And the Ministry of Environment कहउचे that is Forest and Climate Change जोटा कि मो EFCC हमें कहउचे. Clear? एति की बुझिस धन तमे गुड नाइट कहि देला ना धन प्लीज क्लास छाड़ी के जाओनी प्लीज क्लास करो चलो. सो द मेजर ओडिशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर. Oh, चलो. So the major Odisha government initiative for forest conservation का कुछ मिशन शक्ति नहीं guys, मिशन शक्ति नहीं. वन सुरक्षा Green Odisha Forestry Sector Development Project that is the OPSC. Okay. Right answer कौन होगा? ना मैम that is the D Odisha Forestry Sector Development Project. Clear? So the Odisha Forestry Sector Development Program guys आपनकर OPSDP कहाँ अंडर आसीबो? This is a major initiative and ये आपनकर Odisha Forest Department अंडर रे guys आसी सेटा थरे हुए केबे हुए ना माने एमती दिल्ली पुछला कोन हो. So primarily in the partnership कहाँ सहित ना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका द्वारा ये partnership करिछि and the first phase running from 2006 to 2015 and the second phase currently is in progress. मने रखो गोटे बाई गोटे एक्सप्लेनेशन गाइस बहुत इंपोर्टेंट ताकू भलो से मने रखी कि एग्जाम को जीवो. हो चलो
नेक्स्ट मते कुआ कांजिया लेक विद इन दंडका सॉरी नंदनकानन कांजिया लेक विद इन नंदनकानन इज इंपोर्टेंट फॉर व्हाट crocodile breeding pai अरे crocodile कौन pai irrigation migratory birds habitat or the hydroelectric power what will be the right answer migratory birds habitat sure हे धन रही गला थरे धन को कहली धन रही गला देखुछ मो कहिबारे केते पावर चलो so right answer कौन हबो ना that is the migratory birds habitat so the Kanjia lake is a natural lake within the Nandankanan zoological park that is recognized as the wetland of national importance it is a habitat for a diverse range of fauna that means fauna कहले आपण माने सब बेले सुनुथबे flora and fauna most of the students are confused with अरे flora कौन fauna कौन guys flow ru flower को छाडी देबो flora fauna animal n अछि fauna रे n अछि that is the fauna is for the animal हां नहीं एमी तो माने हसुच हां चलो नेक्स्ट मते को द टर्म इकोटोन रेफर्स टू गाइस इकोटोन गोटे टर्म अछि दैट रेफर्स टू व्हाट इको जोन जानि छ अरे मैम कर पाउडर ना मैम कर पावर कोन कहू छ किछि भी तुम माने कहू छ खराब लागु जी पाउडर फाउडर लगी गसला हला लागु जी चलो सो द टर्म इकोटोन रेफर्स टू व्हाट that is the transition zone between the two ecosystem polluted zone desert hills or the urban boundary what will be the right answer हाँ right answer कौन हबो ना it is the transition zone between two ecosystem जेते बेले गोटे habitat गोटे animal हेला गोटे ecosystem गोटे eco zone रु आउ गोटे zone को गाइस जाए जेते बेले गोटे zone रु आउ गोटे zone को जाए ताको हमें कौन कहउचे ना ecotone बोली कहउचे हैला So the transition zone between two ecosystem on an ecotone is a transition area between two different ecosystem. It may contain a mix of species from the both ecosystem as well as unique species that are specially adapted to the transition zone. That a good example आपण माने परिबे mangrove forest which is an ecotone between a marine and the terrestrial ecosystem. एतिके clear? ट्रांजिशन जोन जेते बेले गोटे एनिमल गोटे जोन को छाडी के नेक्स्ट जोन को जाए ताको हमें ट्रांजिशन सॉरी इकोटोन कहउचे एंड सम एनिमल्स आर देयर जो माने कोन दीटा जाको जोन रे बैलेंस करि के रुहंती तांको भी हमें कंसीडर करि परिबा दे आर आल्सो कंसीडरेबल ओके हाउ चलो नेक्स्ट मते को The Rusiculia rookery in Odisha is significant for एबे मते पॉइंटा कहउतले मैम गंजाम रे हमर कोन ना मैम ऑलिव रिडल टर्टल भी अछंती कहउतलो ना नहीं सो ए जो Rusiculia रिवर आपण माने कहउचंती कोठी फ्लो हेसी ना मैम इट वाज इन गंजाम हां नहीं मते को ए Rusiculia रिवर आपनकर बाहरी ची कोठु माने पडुची कोठु ना मैम कंधमाल रे बाहरी ची ओ तो बाहर छी ना मैम कंधमाल बाहर छी एंड गंजाम रे फ्लो हेसी so this is olive riddle turtle nesting पाई इस is famous for safe score गला हम चल छी कोन safe score prepare करो safe score काई लागुछ so the Rusiculia rookery is one of the most important mass nesting site known as the ARI bird for olive riddle is sea turtle in India and the world every year guys hundred or thousands of female olive riddle turtle आपण मानकर कोन ना एक करंती ओव्युलेशन पीरियड को आसी जाती ओके नेक्स्ट मते कुआ मेजर ड्राइवर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन ओडिशा मेजर ड्राइवर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स गाइस ओडिशा रे कोन हुए व्हाट विल बी द राइट आंसर यस मैम हां मते कुआ मेजर ड्राइवर ऑफ द फॉरेस्ट फायर कोन हबो लाइटनिंग पाई पे डेलिबरेट एग्रीकल्चर वार्निंग पाई ड्रॉट पाई और टूरिज्म गाइस ड्रॉट एंड टूरिज्म को किछि रिलेशन ही नाही कोन आपन का आसीबो दीटा ऑप्शन मोस्टली कोन आसीबो ना मैम डेलिबरेट एग्रीकल्चर वार्निंग हन नै मते को हम ख्याली नै कि हमें माने कोन सपोज न जाई छ हमें जंगल को गोटे बीड़ी टाणीले पके देले या स्प्रेड हे गला हन नै मते को एंड मेजरली आम मानकर नेग्लिजेंस पाई आम मानकर डिस्टर्बिंग नेचर पाई बहुत सारा फायर वार्निंग हुई हन नै सो द मल्टीपल सोर्सेस इंडिकेट दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेजर कॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स इन ओडिशा with some sources estimate that they are responsible for 90% of fires in India also. So this is human interference by human causing by आपनकर हुई सूर्या कोन बीडीटा कहली हो एमिति कोन होचा चलो so the objective of the project tiger similpal include guys आपनकर प्रोजेक्ट टाइगर केबे आसिला ना 1973 रे आसिथिला आ 1973 रे प्रोजेक्ट टाइगर आपनकर टोटल नेशन वाइड फर्स्ट आपनकर ए 1973 रे ना आपनकर कोन सिमिलपाल ही जाइथिला
जोटा कि लोक माने जानी सुनी करंती जानी सुनी के करंती नि तांकर अवहेला तांकर अलसुआपन जोगटा हुए so right kon habo na conservation and increase of tiger population elephant protection the nuha tourism nuha deforestation nuha obviously tiger project asio mane tiger मानकर conservation पे केबे right करिवो that is 1973 रे आसीथिला एति कि मन रख परिवो so the Similpal tiger reserve was the initiative of the Indian government total buffering होनी राकेश कुमार है ना so 1973 रे हेतिला is that clear next मते को the key feature of biodiversity in Odisha eastern ghat guys Odisha रे eastern ghat उपरे आमे जदी कहिबा त मान को ऑलरेडी कहितली 1972 रे मन रखिबो wild हमर कोन वाइल्ड लाइफ एक्ट आसीतिला वाइल्ड लाइफ एक्ट आपनकर केबे आसीला 1972 रे आसीतिला 1973 रे प्रोजेक्ट टाइगर आसीला 1975 रे आपनकर कोन आसीला ना मैम प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आसीतिला ए तीनटा मन रखितली घोषैथिली चलो so आपनकर कोन आसीबे जन ईस्टर्न घाट कहला मैंग्रोव सहित जीवनी डेसिडियस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट अल्पाइन भी हबनी ग्रासलैंड हबन रहिला कोड आंसर ना दिस इज द डेसिडियस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ईस्टर्न घाट रेंज आपन मानकर कोथि पई फेमस कोथि पई हबो yes that is the deciduous and semi evergreen forest eastern ghat in Odisha are primarily composed of a variety of forest types including the moist deciduous dry deciduous and semi evergreen forest out of that आपनकर semi evergreen forest and एठी आपनकर कोन ना alpine forest is not in the list चलो next मते को the term endemic species means आपन माने को स्टार्टिंग रे कहितली what is endemic what is endangered so ता भीतर मते कहिलो एबे तम माने को राइट आंसर निजे को right answer the term endemic species means the extinct species the migratory species the species confined to a specific area or the aquatic species Saurav Kumar was stand कौन पाए है जी अमित बाबू सौरभ ऊपर एतिकी क्रोध वर्षिलो तो endemic species कहले अपन कोन बुझन species confined to a specific area that the species confined to a specific area guys so an endemic species is a type of organism that is native to a found only in the specific geographical location that means अपन कोन geographical indication gi tag मिले काहाकू ना जे कोनोसी गोटे जिंस को नै कि गोटे पदार्थ को नै कि हमें कहूचे गोटे ऑब्जेक्ट को नै कि कहूचे नॉट अ लिविंग बॉडी सो ए जो जिंसटा आपनकर रहुची जीआई टैग होची तापन जेतेबेले लिविंग कथा आसिला बारी हमें जेटी एंडेमिक स्पेसीज वर्ड यूज करूचे एंड से एंडेमिक स्पेसीज आपनकर कोन होची ना पर्टिकुलर गोटे सेफ जागा रे गोटे जियोग्राफिकल कवर्ड एरिया रे गोटे जियोग्राफिकल कवरिंग एरिया रे पर्टिकुलर गोटे रीजन रे गोटे प्लेस रे गोटे लोकेशन रे आपन माने देखिबा ताको पाए हैला हां हां चिन्मय निहाती नेक्स्ट आसा ओडिशा कम्युनिटी बेस्ड मते को ओडिशा कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज व्हाट पेसा एफआरए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और द वन महोत्सव कोन होची मते को व्हाट विल बी द राइट आंसर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखा अछि ऑप्शन ने ता सहित फॉरेस्ट रिजर्व भी अछि ता सहित मते को व्हाट विल बी द राइट आंसर कोन कोन हबो मते को जल्दी क्विक joint forest management very good कौन हबो जदी हबो joint forest management because पैसा आपनकर कोन होची ना this is the पंचायत कौन हबो ना ये पंचायत कोन ना मैम एग्जीक्यूशन और एक्सटेंशन सॉरी पंचायत एक्सटेंशन to the scheduled areas ये पड़ेला पैसा so right answer आपनकर कोन हबो ना मैम joint forest management Odisha was a pioneer in adopting the joint forest management JFM approach even before the nation policy was implemented in 1988 जेतेबेले 1988 रे गाइस आपनकर फर्स्ट टाइम पे फॉरेस्ट ऊपर इंप्लीमेंटेशन हेतिला नेशन वाइज ता पूर्व आपन मानकर ओडिसा रे एटा इंप्लीमेंट हे साच क्लियर यस गाइस चलो नेक्स्ट मते को eutrophication in Odisha takes eutrophication in Odisha's lakes refers to guys eutrophication माने कोन बुझुचो जेतेबेले excess of nutrition हे जाय वाटर बॉडी रे
जेते बेले एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन हे जाय वाटर बॉडी रे ताको हमें कोन कहउची ना यूट्रोफिकेशन हना नै को मते सो राइट आंसर एठी कोन हबो ऑयल स्प्लिट्स न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कॉजिंग द algal bloom water salinity rise or that is the sewage scarcity what will be the right answer tell me तुम मानकर आंसर कोन दिए देखि लेबा algal bloom हां हां देखो so this is the nutrient enrichment causing the algal bloom okay yes Kamlesh Corridor, तमे भी delete how eutrophication is the process of body of water becoming the overly enriched with nutrients such as the nitrogen and phosphorus which हां एटा क्वेश्चन आसीबो भारी आपन को साइंस एंड टेक ऊपर गाइस बहुत सारा क्वेश्चन आसुची तो एटा आपनकर क्वेश्चंस आसी जिवो कि नाइट्रोजन आपनकर जो यूट्रोफिकेशन फेज सेतिर आपनकर वाटर बॉडीज रे कहार गैसेस को गैसेस रो लेवल बढ़ी जाय दैट इज द नाइट्रोजन और फास्फोरस ऑप्शन ने दिबो गाइस याकू चूज करिवो and because of that आपनकर algal bloom रो rapidly growth हे हैला मैम जनरल साइंस आज गोटे भी आसीनी एग्जाम रे किंतु आसुची ना साइंस एंड टेक ऊपर क्वेश्चन आसुची को शिफ्ट रे कोन होची किछ जण नै पूरा एमिति त माने स्ट्राइक फाइक करलो से पूरा मिसई गोले के फेंटी दोचंती मैम लेखुचारे डिलीट करूछ बहुत अछि ना कि संजीत बहुत जल्दी आसिला लेट हेबी इकोलॉजिकल सक्सेशन रेफर्स टू व्हाट गाइस इकोलॉजिकल सक्सेशन व्हाट आपन कोठी फर्स्ट टाइम सुनुथुवा या फिर आगुरु मो पढाई से त माने भी देखिथिबो जो माने देखिना त माने फै नुवा आशीर्वाद विजयी भव गायत्री जाओ देन को that is sudden species change सेतिर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहउचे ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज ओवर टाइम ताकू कहउचे फूड चेन कोलैप्स कहउचे और इन्वासिव स्पीशीज स्प्रेड कोन हबो राइट आंसर देखिया कौन मारुछ राइट आंसर राइट आंसर दियो म यस मैम नो मैम बहुत मस्त मैम बढ़िया मैम चोखा मैम एरा करनी हां बी कोन आसी ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज ओवर टाइम सी कौन होची ना दिस इज द ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज ओवर टाइम इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ a gradual that is the predictable and the directional change in the species composition of an ecological community over a period of time that means आपण माने कोन कहबे ना जे कोनोसी प्रोग्रेस हबो ता प्रोसेस सेते बडे स्टार्ट होची फ्यू स्पेसिस मानक भितरे तांकर आपण माने ऑलरेडी गेस करि पारिबे कि गोटे छोटो गोटे पाघटे जन्म होची फॉर एन एग्जांपल गोटे भालुटे जन्म होची तापरे पुई से स्टार्टिंग जन्म हो शिकार करेनी ना बट से आगु को जाई कि शिकार करिवो इट इज प्रेडिक्टेबल और नॉट तमे माने कहबो मु साप को आनी घरे पोसीबी बट साप तो तुमको छोट मारिबो इट इज प्रेडिक्टेबल बट तमे आउट ऑफ द फ्लो जाई कि कहबो मु साप पोसीबी बाघ पोसीबी तो से तुमको कामुडिबो से तुमको रांपिबो होना नै मते को सो दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट Odisha State Action Plan on Climate Change focuses on guys Odisha State Action Plan Odisha State Action Plan on Climate Change focuses on what right answer kon habo that is the mitigation and the adaptation strategies only coastal protection forest surveys or energy audits kon habo energy audits Odisha State Action Plan climate change ऊपर जब पचारि दोछि ताहाले हमें कोन कहि परिबा ना different types of mitigation को हमें accept करिया को पड़िबो so this is the mitigation and adaptation of strategies जेमिति कि the Odisha State Action Plan on climate change is comprehensive plan that outlines the strategies and the actions for both mitigating and adapting to the impacts of the climate change तो हमें कहि परिबा different type रा climate change guys होछि मैम प्लीज मिक्स करके क्वेश्चन जानतु जयराम पिंक मिक्स क्वेश्चन आनी हपनी बिकॉज आपण मानकर भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आसुची सपोज गोटे क्लास रे आपनकर लास्ट क्लास फाउंडेशंस एंड फाउंडर्स थिले प्रीवियस थिले आपनकर बजेट ऊपर क्वेश्चंस आज आपनकर इकोलॉजी एंड ईवीएस ऊपर क्वेश्चन अछि काली भी आपण मानकर जने कहली इंपोर्टेंट डेट्स ऊपर क्वेश्चन आनिया पे इंपोर्टेंट डेट्स रे क्वेश्चंस काली आपण मानकर रहिबो जदी मिक्स करके आनिबा त माने कोटरे क्लियर हबो गोटे 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 करके फेंटी के त माने केमदी भल लागछ त माने कमु मिक्स करके आनिले तमे माने कहिबा कथा कि मैम मिक्स करके आनंतुनी हमें पागल हो जाउछु हना नै ताको आपण माने कहिबे कि मैम चैप्टर वाइज आनंतु मैम धीरे सुस्ते हमें चैप्टर वाइज पढिबा सो दैट हमरा कांसेप्ट गोटे गोटे क्लियर हे कि जिवो गोटे गोटे चैप्टर आपनकर सॉरी
तो गोटे गोटे चैप्टर आसिले आपण मानकर बुक्स टू ब्रेन ही जीवन नै मते को हां तो चल तो नेक्स्ट मते को OSDMA, that is the Odisha State Disaster Management Authority, was created to manage what? Odisha State Disaster Management Authority आपन कहितला ओके पीली थाओ तो कौन हबा पॉल्यूशन ऊपर तो हबनी आपण मान जानि संती ओडिशा इज अ साइक्लोन एंड फ्लड फ्रॉम स्टेट दैट्स व्हाई कैन वी से this is the disaster management team is being made for to manage the कोन ना cyclones and floods. So the OSDMA was established after aftermath of 1999 महाबात्या परे आपनकर एटा फॉर्म हिथिला. So this is to focus the preparedness कहा परे ना मैम जदि आपण मानकु खबर आसुची प्रेडिक्शन आसुची कि साइक्लोन आसुची ता पूर्वरु हमें केमिति प्रिपेयर हेबा सेटा इज द डिजास्टर मैनेजमेंट रो काम हैला. हां चलो लाइक करिना शेयर करिना जो माने पर्यंत सब्सक्राइब करिना क्लास को डू सब्सक्राइब फर्स्ट ओके देन लाइक करो देन शेयर करो हैला. चलो शेयर कलो तमर कोडे पिला बढ़ी जिवे कमेंट जो पिला बढ़ी गले त माने कर कोन कंपटीशन बढ़ी जिवो की मिथ माइंड रे अछि त माने कर. सो इन एन इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर्स आर गाइस गोटे इकोसिस्टम जते बेले आपण माने कर हुए देखि दिबो पिरामिड. सो इकोसिस्टम रे आपण मानकर स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत आपनकर कोन थाए ना तीनटा ट्रायर थाए प्रोड्यूसर डिकंपोजर और हमें कोन कहि परिबा स्टार्टिंग रे आपनकर प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर देन टर्शियरी कंज्यूमर सेम आपनकर प्रोड्यूसर भी सेम थांती प्राइमरी प्रोड्यूसर सेकेंडरी प्रोड्यूसर टर्शियरी प्रोड्यूसर. सो या अकॉर्डिंग मते को इन एन इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर व्हाट animals decomposers green plants or the algae fungi produce जो माने करिवे को माने जो माने प्रोड्यूस करिवे. सो स्टार्टिंग आपन कर कोठ होउची ना मैम घास को झिंटिका खाउची एंड सो ऑन हो ना नहीं झिंटिका को बेंग को साप एंड सो ऑन. तो या अकॉर्डिंग जदि हमें जिबा so in an ecosystem the producers are organizations that produce their own food usually through the photosynthesis they form the base of the food chain. So food chain hela तार स्टार्टिंग हला आपनकर कोठु ना प्लांट्स रो बिकॉज़ आपनकर थ्रू द फोटोसिंथेसिस फास्ट प्रोसेस आपनकर ना ग्रीन प्लांट्स मानको आसे. क्लियर yes producers always the plants then green plants and algae are the primary examples of the producer. Animals are the consumers decomposers and fungi are the type of decomposers also. एतिके बुझिस. नेक्स्ट the International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystem is observed on. Tell me. मैम को टेलीग्राम रे जॉइन करा गोटे सरप्राइज अछि सो जॉइन फास्ट. अच्छा मो टेलीग्राम जल्दी से जॉइन करा गोटे सरप्राइज अछि जोडे मो जानिनी मो पाई भी सरप्राइज. चलो जल्दी जॉइन हुआ. हां मौसमी प्लीज टेक रेस्ट ठीक बाम लगे की सोई पड़ो हैला. The International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystem is observed on guys केबे हुइतला केबे हुए मते को every day 26th of July को केबे 26th of July. So the day was established by the UNESCO in 2015 so to raise the awareness about the importance of the mangrove ecosystem as a unique vulnerable and the species ecosystem special ecosystem and to promote the solutions for their sustainable management. ताकू केमिते हमें मैनेज करियो नै जोटा हमरा हेंताळ बन अछि भीतर कनेक्ट. क्लियर 26th of July को मन रख. इंपोर्टेंट डेट्स काली बा कहिबा काली कहिबा. नेक्स्ट को which of the following is not a major wetland of Odisha. मेजर वेटलैंड इजीली एलिमिनेट कर दबा. चिल्लिका रहिला कोन आपनकर वेटलैंड अंशुपा रहिला तांपर रहिला उल्लार लेक कोठी आपनकर अछि मते कहला उल्लार लेक आपनकर अछि कोठी एलिमिनेट ताकू करि देबा. ओके सो उल्लार लेक आपनकर कोन एलिमिनेट होई जिवो बिकॉज़ आपन मान जानि संती उल्लार लेक आपनकर कोठी आसीबो जम्मू कश्मीर हो नै जम्मू कश्मीर को पड़े आसीबो. नेक्स्ट देखो चिल्लिका इज अ लेक इज अ मेजर वेटलैंड ओडिसा रे आपन माने ऑलरेडी अंशुपा हला चिल्लिका हला आपन जानि संती चिल्लिका आपनकर केबे 1981 रे जाइथिला the first Ramsar site of India and आपनकर अंशुपा हला टैंपरा हला 2021 रे रामसर साइट रे जाइछन. क्लियर. नेक्स्ट the Khamari area inside Chandaka Dampara sanctuary is known for what? The Khamari area मैम जियोग्राफी और एनवायरनमेंट किसी भी आंसर दे पारुनी है. अरे सबुटु बेस्ट सबुटु बढ़िया जति लागे कोडा पढिया पई से हला इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट
तापर है जियोग्राफी ए भला टॉपिक गुडा तुम पढुनो केमती कांसेप्ट क्लियर हे पढिबो थरे बुझी जाइथिबो सेकंड टाइम माइंड रु हटिबो नाही माने तमरा हिस्ट्री हैला पॉलिटी हैला ए सब तमरा डेट भीतर कंफ्यूज हे जा होना नै म देखो किंतु गोटे कांसेप्ट जदी जियोग्राफी इकोलॉजी माने साइंस ऊपर क्लास करी कहूची किसी गोटे साइंटिफिक रीजन दे कि गोटे जिंस मले रखिथिबो मैं मल्ला जाय सेटा भूलिबोनी कोन होनी तमरा की कथा कहूचो हां चलो so the Khamari area inside the Chandaka Dampara sanctuary is known for what leopard guys आपनकर चंदका कथा कहि देला माने आपण माने कोन एलिफेंट सहित जिबे कोठी ना मैम एलिफेंट सहित हमें जिबे clear so the sanctuary was specially established kebe in 1982 re and for the conservation of the elephants and their habitats although the sanctuary is home to the wide range of the flora and fauna clear मोर भी हुए तमरे कोन मोर भी हुए नेक्स्ट को ए पोटेंशियल कोन करे पूरा कथे 10-15 टा भुकिलेनी चलो so the potential impact of rising sea levels on Odisha's coast is guys the potential impact of what will be the right answer tell me dita matra dita हल्या so a potential impact of rising sea levels on Odisha coast kon है coral bleaching guys coral reef Odisha re nahi coral reef Odisha don't have fresh water expansion salt water intrusion and coastal erosion or the glacier formation kon habo na ma'am it is the salt water intrusion and the coastal erosion based on the rising sea levels are a significant driver of the saltwater intrusion and the coastal erosion along the coast of Odisha. Clear? एतिकी बुझी परिबा what is the saltwater intrusion? The rise in the sea level causes the salinity water जोटा कि हमर कोन राइज हबो जदी देखा पानी रे हमर कोन अछि ना सॉल्ट अछि जे पर्यंत समुद्र रे अछि भाई सी तार सॉल्टीनेस देखू जते बेले आपन को लैंड अडु को अक्वायर्ड होछि लैंड अडु को आपन को धीरे धीरे पानी आसु जिताले आपन को नियरेस्ट सॉइल सेथरे भी अफेक्ट हबो salinity कोन सॉइल को भी अटैक करिवो सो आपन को कोन salinity टोटल एरिया रे आपन को आसी जीवन नै म देखो टोटल कोस्टल एरिया आपन को कोन alluvial soil टू माने कोस्टल एरियास परे परे आपन को स्टार्ट है alluvial soil so alluvial soil ऊपर तो आपन को salinity स्प्रेड हबो सो माटी रो उर्वरता लॉस हे जीवो होना नै next and last question the forest rights act 2006 affects the Odisha's ecology by guys the forest right yes tell me the forest right act 2006 affects the Odisha ecology by केमिति forest right act guys Odisha रे ecology को affect करिछि industrial expansion जोगु empowering the forest dwellers for the better conservation eviction of tribals or the mining purpose कौन हबो राइट आंसर दियो गोटे ढाबा बाड़ी दियो लास्ट टा ढाबा गोटे बाड़ी दियो लास्ट टा गाइस कौन हबो राइट आंसर बी हां हां राइट दैट इज द empowering the forest dwellers for the better conservation ढाबा भी मारू छ तमानकर पूरा जागा रे बाजू ना की so the forest right act FRA 2006 recognizes the right of forest dwelling scheduled tribes and other tradition forest dwellers to the forest land and resources so the act's primarily objective is to undo the historical injustice done these communities am I clear or having any doubt board option किछि डाउट आउ रही छी और आज रे सेशन को आउ थरे देखि देकी जिबा गाइस बहुत इंपोर्टेंट हो जे अपन माने भाबु संदी सिना यार की क्वेश्चंस आसु छी ऑल द बेस्ट इन माय पाठ पढ़ा चढ़ी सब तुम मान माइंड रे पसु छी राइट हमसे जो नजरे सुराने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो बुझिला मिस्टर तमान का पई ही एटा जिबा चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच अगेन कहू छी जो माने बैच परचेज करता 3499 प्राइस रही 1.5 ईयर वैलिडिटी विद दैट अपन माने किछि भी बैच रिलेटेड क्वेरी जे अछि नंबर को कांटेक्ट करंतु both for the teaching examination also price 1499 but यार validity 1 and जो माने pdf पाई ओरिड होसंती हां हो जो pdf पाई that is this telegram scan करंतु वेदांग क्लासेस रा टेलीग्राम रे जॉइन होंतु and after that guys आपण माने फ्री रे pdf पाई परिबे and जो माने मो सहित कनेक्ट हेबा को चाहउसंती
बुझिल द ग्रेट सुदीप्ता मैम का सहित तो सुदीप्ता जीके नेटवर्क को इंस्टा रे फॉलो करि पारिबे एंड मु सुदीप्ता जीके नेटवर्क विषय रे कहूची सब पर्सनल अकाउंट को काहे कि सब फ्रेंड रिक्वेस्ट पठौछ म जाननी एबे डिलीट करिथिली 780 पुणी 340 भले आपनकर पुणी 340 आपनकर फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड हो गलानी केते डिलीट करिवे रे गीतटा मो पाई थिला जहा पाई थिला जहा को दरकार से निज देह को टाणा आ जहार टाणी पारुना से माने एंटरटेन हो दैट्स इट जहा हो आसुतोष हो चलो जीवा थैंक यू सो मच गाइस एंड अगेन आई एम सेइंग एंड रैपिडली गाइस रिपीटेडली मु कहूची सब बेले निजठू अधिक दुनिया जाक लोकंठू अधिक बापा मां को प्रायोरिटी दबो बिकॉज तमान को आउ थरे कहूची तमाने बंचुच बंची पारुछ तार रीजन होसंदी बापा मां एंड द मोमेंट तमे कष्ट दबो बापा मां को से माने तुमको एबे अभिशाप देबेनी से माने केबे भी तम नारे किछि खराब चिंता करिवेनी बट से जो इनर लाइक हार्ट को तांगर अफेक्ट करिवो से जो टिके मुहूर्तक पई कष्टडा सेटा तम टोटल जीवन को फलेगी रखि दबो बुझिला so bye guys take care of yourself but before that do prioritize your parents they should be your first priority no one else in the world thank you so much bye bye guys bye bye take care